Thanks for tuning into my Bollywood Body. मैं आपका होस्ट सनी सलू भाई आज आपके साथ डे 17 का वर्कआउट शेयर करेंगे. इट्स अ बैक डे टुडे. मेक श्योर यू कार्ब अप. कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू. आइदर आप वेट गेन कर रहे हैं और वेट लूज कर रहे हैं. सर्टेन मसल्स के अंदर स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग इनटू बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, कार्ब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रोटीन. कार्ब विल गिव यू द एनर्जी, यू कैन पुश, यू कैन ब्रेक द मसल फाइबर्स. प्रोटीन विल हेल्प यू रिकवर एंड नरिश द मसल. बैक डे के अंदर सबसे पहली चीज, हमारा पहला असूल, यू नो, स्ट्रेच स्ट्रेच. स्ट्रेचिंग मेक्स यू लेस प्रोन टू इंजरी. एक क्या क्या किसा आती मैं पूरी. मूविंग ऑन, पहली एक्सरसाइज आपके साथ हम शेयर करें. we're going to do 3 sets of 12 pull-ups. We're using an attachment, but you can actually do it on a pull-up bar. Let's go. Or you can do it on a pull-up machine as well. Nice and slow. ऊपर जाके squeeze कराना है, नीचे लाके stretch कराना है. Keeping your ball back a little bit slanted like this, ताकि सारा का सारा जो प्रेशर है वो आपकी बैक के अंदर जाए. 3 सेट 12 रेपिटेशंस के. दैट्स इट. अगर आपसे इस तरह फॉर एग्जांपल पुल अप नहीं हो रहे, आई वुड रेकमेंड कि आगे एक बेंच रख लें और बेंच के ऊपर अपना एक पैर रख लें. सो दैट वे यू आर डिवाइडिंग योर बॉडी वेट इनटू हाफ. सो आप अपना खाली आधा बॉडी वेट ही यूज कर रहे हैं. Especially if you're very heavy and you can't do a pull-up, or if you're skinny, you should be able to knock off 3 set 12 pull-ups की आपकी पहली एक्सरसाइज है. Moving on to second exercise of the day. Now we're doing 4 set 10 repetitions के lat pull down. Keeping the grip जहां से बार बेंड होती है वहां तक. थोड़ा सा जिस तरह आप पुल अप में थोड़ा बैक रहे हैं, उसी तरह नीचे लाके स्क्वीज कराएं, ऊपर लाके स्ट्रेच. पुल अप के अंदर आप ऊपर स्ट्रेच कराते हैं, नीचे स्क्वीज. इसके अंदर हियर यू गो, स्क्वीज एंड स्ट्रेच. सॉरी, पुल अप में रिवर्स है, ऊपर स्क्वीज है, नीचे स्ट्रेच है. इसके अंदर नीचे स्क्वीज है, ऊपर स्ट्रेच है. सेम कॉन्सेप्ट. कोशिश करें आपकी कोनियां पहले नीचे आए, कोनियां पहले नीचे लेके हियर यू गो. दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग पुल अप्स. दैट्स इट. चलो भाई, 4 सेट 10 रेपिटेशंस के लैट पुल डाउन्स. On an average, I would recommend 30 to 45 second breaks in between the sets. Moving on to your third exercise, let's do one arm dumbbell row or a lawnmower row. आपको कोई भी हमारी एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल समझ नहीं आती, हमारी हाउ टू प्लेलिस्ट में अबाउट 100 वीडियोस हैं. हर वीडियो इंडिविजुअली 4-5 मिनट हमने शूट की हुई है. Put, oh yes, no, yeah, face this way. Doesn't matter which way. Oh yeah, yeah, sure. So जिस हाथ में आपने डंबल पकड़ा हुआ है, वो वाली टांग आपने जमीन पे रखनी है. टांग पीछे करना सुनो भी थोड़ी. ये वाली टांग पीछे करना. Here you go. Keeping your back straight. उठाएं. Here you go. Now row it. सेम जिस तरह आपने पुल अप के अंदर किया था, कोनियां पीछे आई थी, सेम एज वन आर्म रो के अंदर, लॉन रो के अंदर भी आपने कोनी को ऊपर खींचना है. और आपने मेक श्योर रखना है कि आपकी बगलों के अंदर और ट्राइसेप के बीच में ज्यादा गैप ना हो. यू ना, सॉरी लगी तो नहीं. दैट इज योर रियर डेल्ट. अगर आप बगलों को और अपने बैक को इकट्ठा लेके आएंगे, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली टारगेट योर बैक मसल. 4 सेट 12 रेपिटेशंस के, 12 इधर के 12 इधर के, फिर ब्रेक. 4 सेट आपने टोटल लगाने हैं और इसके 12 रेपिटेशंस आपने लगाने हैं. मूविंग ऑन टू योर फोर्थ एक्सरसाइज. Now we're going to do reverse grip barbell row. One of the great exercises. This will give you wings. What again? Red Bull khade ch. Aise sanu susana kar de panji. Okay, bend over. I mean, bend, just bend, not forward, bro. Not over. English too bad. English too bad. Keeping your back straight, chest out. Here you go. अपनी बैक को सीधा रखें, ऊपर लाएं, स्क्वीज कराएं, नीचे लाएं, स्ट्रेच कराएं. लेकिन ये अगर मेक श्योर कोनी का कॉन्सेप्ट याद रखें. जब भी आपने बैक में लगाना है, कोनी पहले ऊपर आनी चाहिए. Here you go. Use your elbow rather than, don't be like कि आप शोल्डर को यूज करें, बाइसेप्स को यूज करें. एल्बोज को यूज करें. अप एंड डाउन, नाइस एंड स्लो. That's it. That's it. That's it. You don't really have to bend all the way down. जितना नीचे जाएंगे, उतना आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ेगा. You just have to be a little bit slanted so you can actually feel it in your back. आपने इसके 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस आप उससे लगाएं. 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन बारबेल रो के. Let's move on to your next exercise. And you know what? Hard time हम ना मैं उठा चलता हूँ. इस बारी बॉडी just हाले. You know I'm gonna walk like that. Who cares? How do I look from the back? You know? Watch. Make sure to follow me. Now follow me. Now we're gonna do seated row. After the barbell row, since you already targeted the wider, the outer part of your lats. Keep, yeah, reverse and wider. So now we're doing wide grip, reverse grip के साथ seated row. Barbell में और भी हम जोड़े थे, same concept. लेकिन see इसमें आपकी flexibility ज़्यादा है. You can actually stretch your muscle, keeping your back straight. कुब नहीं निकालना. Here you go. छाती बाहर निकालना चलो भाई. और here you go. Now we're talking. Beautiful. 3 सेट 12 रेपिटेशंस के. पीछे लाएं, स्क्वीज कराएं. थोड़ा सा प्ले बॉडी में होना चाहिए. आप you're not a robot. So you know थोड़ा बहुत प्ले बॉडी में हो, it's always good. Just like Salu bhai is doing, there's a little bit of a play in his body. And one more Salu bhai, and that's it. 3 सेट 12 रेपिटेशंस के वाइड ग्रिप के साथ. And here we go. Let's go. Now we're going to do 3 sets 12 repetitions of close grip. Let me show you one thing. जब आपने वाइडर ग्रिप लगाई थी ना, you targeted here. Now you're targeting right here.
with the closer grip. So कोनी, just remember, अगर आपकी कोनी पीछे नहीं आएगी ना, you won't feel it. So look, just go back and forth and then do couple of reps just with the कोनी. Do couple, ऐसे करें, 2-3 ऐसे करते रहें, लगाते रहें. Yeah, okay. Now do कोनियाँ पीछे squeeze करके लेके आएं. See, you see the difference. You see the difference. So you gotta know. You put your head there. What you just saw, you have to make sure. Patient rewind करके देख लें. Bring your elbows back. When you bring your elbows back, that's when a lot of blood rushes right here into the center part of your back. That's it. 3 set 12 repetitions के आपने close grip seated row. Let's finish off your workout. Let's destroy your back. 6 set 8 repetitions के pullovers के साथ. We use pullovers a lot with the chest workouts as well. It can work for chest, it can work for back as well. Lay down perpendicular to the bench, not bench के ऊपर सीधे लम्बे पे. अपने पैर नीचे रखें. जब आपने डंबल को पीछे खींचना है, अपनी हिप्स को नीचे गिराना है और ये जो जगह है इनको बाहर निकालना है. ऊपर लाएं, here you go. जब ऊपर लाना है, अपने हिप को ऊपर उठाना है. फिर नीचे जाएं, stretch कराएं. ऊपर लाएं, squeeze कराएं. Here you go. और हाथों को बिल्कुल सीधे नहीं रखना, थोड़ा slide bend के साथ रखें. That's it. वापस and beautiful. I want you to do 6 sets. 8 maximum of 10 repetition, लेकिन 6 सेट इसके पूरे लगाएं. YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें. My Bollywood Body. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and Snapchat, and Pinterest, and और भी 2-4 हैं. LinkedIn, and LinkedIn, and what else? What else? Bro, Tinder. Check it out on Tinder too. Super like me on Tinder. Super. He is #DesiBoy16 cute XXO XOXO. That's his nickname.